Namaskar, Suprabhat and good morning to all the bachas of Standard 7. Welcome back once again in math session with Shagil Zaveri at Orbit Smart School. Chapter number 2, Fraction and Decimal. चलिए आगे चलते हैं. Today we are going to learn or understand about division of whole number by a fraction. लास्ट वीडियो सेशन, लास्ट पीडीएफ में हमने देखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द होल नंबर विथ अ फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन विथ अ फ्रैक्शन, बट नाउ वी आर गोइंग टू डू डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. नाउ बिफोर गोइंग टू परफॉर्म डिवीजन वी आर सपोज टू नो समथिंग अबाउट रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा. आदमी शीर्षासन करता है, सर को नीचे कर देता है, पैर को ऊपर कर देता है. दैट पोजीशन इज नोन एज द रेसिप्रोकल. नाउ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, किसका? फ्रैक्शन का. द नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो को छोड़ के एनी ऑफ द नंबर, जीरो को छोड़ के इफ यू टेक एनी ऑफ द नंबर एंड इफ यू गेट द प्रोडक्ट, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन. The non-zero numbers whose product with each other is 1. जीरो को छोड़ के किसी भी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड द आउटकम और द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 1, परिणाम स्वरूप हमें एक मिलता है, आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके वी गॉट अ रिजल्ट 1, दे आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. Now let us understand. Say A is a non-zero number. Multiply by 1 upon A, that is also a non-zero number. मतलब A की वैल्यू भी जीरो नहीं है और 1 upon A भी जीरो नहीं है. If we do the multiplication, A multiply by 1 upon A. Now A and A get cancelled. The outcome is 1, and hence A and 1 upon A are reciprocal of each other. कह सकते हैं. Let us take an example. 2 by 3 multiply by 3 by 2. अभी यहां पे देखो, 2 is a numerator, 3 is a denominator. Multiply by 3 by 2 where 3 is a numerator and 2 is a denominator. Now friends, multiplication में 2 and 2 gets cancelled, 3 and 3 get cancelled, so we get 1, and hence 2 by 3 and 3 by 2 are reciprocal of each other. डिवीजन के मेथड में हम यही करने वाले हैं. ठीक है बच्चों? सो चलिए, नाउ लेट अस गो टू एक्सरसाइज नंबर 2.4 एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड. फाइंड मतलब ढूंढो, पता लगाओ. किसके बारे में? 12 डिवाइड बाय 3 by 4. नाउ 12 इज अ होल नंबर एंड 3 by 4 इज अ फ्रैक्शन. व्हाट वी आर गोइंग टू डू? We will remove the sign of division and we will put a sign of multiplication. लेकिन 3 by 4 reciprocal उल्टा करेंगे 4 by 3. Now we know the table. 3 4s are 12. So 3 and 12 cut करो and we are supposed to write 4 in place of 12, and then 4 4s are 16 is your सही जवाब. Similarly 14 whole number divide by 5 by 6 is a fraction. What we are going to do? Exactly, remove the sign of division and put a sign of multiplication and then write the reciprocal of 5 by 6. Reciprocal क्या होगा? 6 by 5. Now 14 6s are multiply करना है, multiply करना है, टेबल नहीं आता है तो 14 6s are 4 6s are 24 and 2 6 1s are 6 and 2 84. So 84 upon 5 is your सही जवाब. Similarly 8 divided by 7 by 3. Remove the sign of division, put a sign of multiplication and then write the reciprocal of 7 by 3 which is 3 by 7. Now we know 8 3s are 24 upon 7 is the सही जवाब. है ना आसान? है? शेख साहिद क्या बोलता है? पुनीत, हर्ष करते हो ना घर पे? हाँ, यहां पे चलिए. 4 divided by 8 by 3. 4 divided by 8 by 3. Remove the sign of division,
put a sign of multiplication and write the reciprocal of 8 by 3, which is 3 by 8. Now we know 4 1s are 4, 4 2s are 8. So 4 is cancelled, 8 is cancelled, and write 2 in place of 8, and your sahi jawab is 3 by 2. Similarly, now here whole number and a mixed fraction, whole number and a mixed fraction. तो सबसे पहले दोस्तों we are supposed to convert the mixed fraction into improper fraction, that is 3 divided by, now we know 2 3s are 6, 6 plus 1 7, 7 upon 3. Remove the sign of division, put a sign of multiplication, write the reciprocal of 7 by 3, which is 3 by 7. 3 3s are 9 and 7 is your sahi jawab. Question number 6. 5 divided by 3 integer 4 upon 7. Again mixed fraction, convert it into improper fraction. How? Kaise? 3 7s are 21 plus 4 25 upon 7. 5 divided by 25 upon 7. Now remove the sign of division, put a sign of multiplication, write the reciprocal of 25 upon 7, that is 7 upon 25. 5 1s are 5, 5 5s are 25, cancelled 5, cancelled 25, write 5 in place of 25, and your सही उत्तर is 7 by 5. बात समझ में आ गई? चलो और आगे लेके चलता हूँ. Now friends, let us proceed to question number 2. फाइंड द रेसिप्रोकल, फाइंड द रेसिप्रोकल. अभी मतलब हम लोगों ने शुरू किया तभी बात किया कि भाई रेसिप्रोकल, दैट इज द उल्टा, विच इज ऑल्सो नॉन एज द इनवर्स, विच इज ऑल्सो नॉन एज द इनवर्स. रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर इज स्मॉलर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर इज स्मॉलर. एंड होल नंबर्स, मतलब पूर्ण अंक जिसके अंदर डिनोमिनेटर पार्ट इज ओनली 1. ठीक है. नाउ 3 by 7 इज अ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल इज 7 by 3, उल्टा कर दिया. न्यूमरेटर इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 5 by 8, रेसिप्रोकल इज 8 by 5, 8 numerator is greater, 5 denominator smaller, improper fraction. 9 by 7, reciprocal is 7 by 9. Now here 7 numerator is smaller, 9 denominator is greater, therefore it is a proper fraction. 6 by 5, reciprocal is 5 by 6, 5 numerator smaller, 6 denominator greater, proper fraction. 12 by 7, reciprocal is 7 by 12, 7 numerator is smaller, 12 denominator greater, proper fraction. 1 by 8, reciprocal is 8 upon 1. अब मैंने कहा ना न्यूमरेटर 8 है और डिनोमिनेटर 1, तो 1 को हटा के we can write 8, which is a whole number. Similarly, 1 upon 11, reciprocal is 11 upon 1. 1 is the denominator which can be removed and it can be written in the form of 11, and only 11 means whole number. तो दोस्तों आपको समझ में आ गया रेसिप्रोकल. फिर से एक बार आपका रिवीजन भी हो गया कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और होल नंबर क्या है. नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे अगेन इट इज रिटन FIND, फाइंड मतलब ढूंढो, पता लगाओ. किसके बारे में? 7 upon 3. अब इस बार क्या है? फ्रैक्शन इज पहले एंड होल नंबर इज बाद में. सो 7 upon 3 डिवाइड बाय 2, विच कैन बी रिटन एज 7 upon 3 डिवाइड बाय 2 upon 1. होल नंबर है, हमने क्या कर दिया? डिनोमिनेटर में 1 रख दिया. एंड नाउ in place of division we will put a sign of multiplication and then we will write the reciprocal of 2 by 1, that is 1 upon 2. Now 7 1s are 7 and 3 2s are 6. Your sahi jawab. Question number 2. 4 upon 9 divide by 5. Only 5 means whole number. We will write 5 upon 1. In the second step, what we are going to do? Remove the sign of division, put a sign of multiplication, then write the reciprocal of 5 by 1, that is a 1 upon 5. Then 4 1s are 4 and 9 5s are 45 is your sahi jawab. Third, 6 upon 13 divide by 7. 7 means whole number. We will put 1 as a denominator. Then 6 upon 13. Remove the sign of division, put a sign of multiplication, write the reciprocal of 7 by 1, that is a 1 upon 7, 6 1s are 6 and 13 7s are 91. क्या हुआ? 13 का टेबल नहीं आता है, क्या करने का? मल्टीप्लाई. 13
मल्टीप्लाई बाय 7, 21, 2, 99। अब मैथ्स आगे पढ़ना है, आगे एजुकेशन हासिल करना है, तो दोस्तों टेबल तो लर्न करना पड़ेगा। रिपीटेडली मैं आपको कह रहा हूं, इजंट इट? तब भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, बीच में भी आपको कहा था कि भाई लर्न 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 व्हाट? टेबल्स। ओके, नाउ दिस इज अ मिक्स्ड number and divide by 3, that is the whole number. So first we will convert 4 integer 1 upon 3 in an improper fraction. This is 4 3s are 12 plus 1, 13 upon 3, divide by 3 upon 1, remove the sign of division, put a sign of multiplication, write the reciprocal of 3 by 1, that is 1 upon 3, 13 ones are 13 and 3 3s are 9 is your sahi jawab. 3 integer 1 upon 2 which is to be converted into improper fraction, that is 2 3s are 6 plus 1, 7 upon 2. Then divide by 4, that is a whole number, write 4 upon 1, remove the sign of division and put the sign of multiplication, write the reciprocal of 4 by 1, that is 1 upon 4, 7 ones are 7 and 2 4s are 8 is your sahi jawab. खुद से करोगे? लिखा हुआ है, बोलो तो समझा दूं? नहीं, चलो ठीक है, पीडीएफ में है सारी बातें, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन FIND, फाइंड। फाइंड मतलब ढूंढो, पता लगाओ, तलाश करो। 2 by 5 divide by 1 by 2, both are fraction, and we are supposed to perform the division. 2 by 5, remove the sign of division, put a sign of multiplication and then write the reciprocal of 1 by 2, that is 2 upon 1, 2 2s are 4 and 5 1s are 5 is your sahi jawab. Question number 2, 4 by 9 divide by 2 by 3, fraction, divide by fraction, 4 by 9, remove the sign of division, put a sign of multiplication, write the reciprocal of 2 by 3, that is 3 by 2, 2 2s are 4, then 3 3s are 9, cancel कर दिया हमने 2 से 4 को and we have written 2 and cancel 3, cancel 9 and write 3 in place of 9, then your final uttar is 2 by 3 is your sahi jawab. Question number 3, 3 by 5, 3 by 7 divide by 8 by 7, both are fraction. 3 by 7, remove the sign of division, put the sign of multiplication, write the reciprocal of 8 by 7, that is 7 by 8, 7 and 7 get cancelled, so your sahi jawab is 3 by 8. 2 integer 1 upon 3, हाँ, mixed fraction, to be converted into improper fraction, that is 2 3s are 6 plus 1, 7 upon 3, in place of division put a sign of multiplication, 3 by 5 का reciprocal 5 by 3 लिखा, उसके बाद 7 5s are 35 and 3 3s are 9 is the सही जवाब. रिया और दिशा, बात समझ में आ रही है ना बेटा? घर पे कर रहे हो ना होमवर्क? ओके, चलिए आगे. 3 integer 1 upon 2 divide by 8 by 3, again 3 integer 1 upon 2 mixed fraction is to be converted into improper fraction, that is 3 2s are 6 plus 1, 7 upon 2, in place of division put a sign of multiplication, write the reciprocal of 8 by 3, that is 3 by 8 and then perform the multiplication. 3 7s are 21 and 2 8s are 16 is your sahi jawab. 2 by 5 divide by 1 integer 1 upon 2, mixed fraction to be converted into improper, that is 2 1s are 2 plus 1, 3 upon 2. 2 by 5 divide by 3 by 2. Now in place of division put a sign of multiplication and 3 by 2 का क्या करेंगे? We will write the reciprocal, that is 2 by 3 and 2 2s are 4 and 5 3s are 15 is your sahi jawab. 3 integer 1 upon 5 divide by 1 integer 2 upon 3 इस बार both the terms are mixed fraction. दोनों को पहले क्या करेंगे? We will convert it into improper fraction, that is 3 5s are 15 plus 1, 16 upon 5 divide by 1 3s are 3 plus 2, 5 upon 3. उसके बाद 16 upon 5 in place of division put the sign of multiplication and then write the reciprocal of 5 by 3, that is 3 by 5. 16 3s are 48, multiply कर लेना दोस्तों, टेबल नहीं आता है तो, and 5 5s are 25 is your सही जवाब. The last आज के लिए 2 integer 1 upon 5 divide by 1 integer 1 upon 5, both are mixed fraction to be converted into improper. How? So 2 5s are 10 plus 1, 11 upon 5, 5 1s are 5 plus 1, 6 upon 5, in place of division put a sign of multiplication, write reciprocal of 6 by 5, that is 5 by 6, 5 5 get cancelled and your सही उत्तर is 11 by 6. बोलो दोस्तों, ये समझ में आ गया आप लोगों को?
डिवीजन कैसे करना है, रेसिप्रोकल कैसे हासिल करना है, फिर से एक बार कैसे इम्प्रॉपर, प्रॉपर, होल नंबर, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, है ना। रिवाइज करते रहो, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और समझो कभी प्रॉब्लम आ गया तो यू कैन आस्क मी। ओके फ्रेंड्स, सो हैव ए नाइस सैटरडे, एंजॉय संडे। आपका वीकेंड प्लान कर दिया है, थोड़ा काम भी कर लेना और थोड़े मजे भी कर लेना। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।